All right. So some of our panelists are here. तो शुरू करते हैं. Already it's 9:05. Joy sir, Sagar sir, Davinder sir, are you able to hear me? Yeah, we can hear you, Vishu. Awesome, Yeah, awesome. I'm we audible can. or not? Let me know. Yes, 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 yes. Everybody is loud and clear. Oh, बिल्कुल शुरू करते हैं. So आज का topic is FNO पे चर्चा. This is a very interesting topic. Equity तो ठीक है हम लोग अक्सर ही डिस्कस करते हैं and long term holding, long term investments हम लोगों ने बहुत किया है. Futures and options is to a lot of retail investors it's still a mystery. It's still something वो अलग ही लेवल पे चलता है. And so we thought इस पे भी कुछ स्पेशल करते हैं. We have with us some of our experts जो कि of course pros हैं. इनसे आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि generally what their strategies are in futures and options, and we'll also try to ask them कि आज का दिन if they traded तो how was it. Another very interesting thing that's gonna happen is next week हम लोग live trading का भी एक session plan कर रहे हैं. Of course, everybody knows, and it's आप लोग हमारे regular listeners हैं, you would be aware कि Trinkerr is absolutely free to use and everything is free. Just to get a but eventually every business has to evolve and get some revenue streams. What we are trying is this is all is probably a direction we are trying to explore where maybe we can create something as a platform where people can come and learn, and those who are experts can lead as well. uh, इसका एक क्विक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करने की कोशिश करी है. जनरली लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप्स होती हैं एनीवेयर बिटवीन 2000 5000 से स्टार्ट होती हैं. एज एन एक्सपेरिमेंट हम लोग बस ट्राई करने के लिए आ गए हैं. नो प्रॉफिट मोटिव्स हियर, बहुत छोटे अमाउंट्स हैं, बट जस्ट टू सी कि हाउ मच इंटरेस्ट पीपल हैव इन लर्निंग द ट्रेड सीक्रेट्स, द ट्रिक्स ऑफ द मार्केट, द स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग. लाइव ट्रेडिंग सेशन एक ऑर्गेनाइज किया है. पैनलिस्ट हम लोगों के होंगे. कुछ एक पैनलिस्ट उनमें से आज हमारे साथ इस पैनल पे भी होंगे, जो कि आज शेयर करेंगे उन्होंने आज क्या किया एंड स्ट्रैटेजीज क्या हैं, एंड देन सेम स्ट्रैटेजीज नेक्स्ट वीक एक जूम कॉल पर वो लाइव शेयर भी करेंगे. इफ यू गाइज फाइंड देम इंटरेस्टिंग, ऑफ कोर्स थ्रू द पॉडकास्ट आप सुनते रहो. आई विल कीप रिपीटिंग दिस मैसेज लाइक अ advertisement, but please do, if you like what we do, our podcast, our application, everything, and if you are interested in learning more and more, so help us in determining whether this is a direction we should opt for. मैंने इस स्पेस के ऊपर एक पिन भी किया है ट्वीट, एंड यू कैन जस्ट क्लिक देयर, चेक आउट अ वेबसाइट. क्या होने वाला है वहां पे भी डिटेल्स मिलेंगे. उसका एक कुछ स्नीक पीक आज भी मिलेगा. ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉडकास्ट ट्रिंकर का स्पेसिस पे जिसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, चार्ट्स नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, तो उतना इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं होता है. एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट यू विल गेट इन द वर्कशॉप काइंड ऑफ दैट वी आर प्लानिंग. वी आर कॉलिंग इट ट्रिंकर ट्रेड स्प्रिंट, जो नेक्स्ट वीक थर्सडे एक्सपायरी 1 सितंबर को प्लान है. जॉय सर होंगे, सागर सर होंगे, दविंदर सर होंगे, ब्रेकआउट चार्ट सर भी होंगे, एंड हमारे साथ और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं. आरुष सर ज्वाइन करने वाले हैं, हर्ष दीक्षित सर ज्वाइन करने वाले हैं, मानवेंद्र सर जो कि ट्रिंकर के सीईओ हैं वो भी हम लोगों के साथ होंगे, एंड विशाल भोसले भी होंगे जो कि वो भी हमारी ट्रिंकर टीम के साथ ही रहते हैं. So it's gonna be a lot of fun. Please do check out the tweet that is pinned on this page. And for now, let's start this amazing session FNO पे, जो कि एक sneak peek देगा इस आने वाले हफ्ते की. So starting with Joy sir, maybe थोड़ा सा can you tell us about your strategies? How do you futures and options में आप क्या prefer करते हो? दोनों करते हो, buy करते हो, sell करते हो, क्या आपकी generally strategies रहती हैं? Yeah, future options is all about timing and speed. Mostly for intraday, I do scalping, and what I follow, actually I follow the directional positional system, but if I get good enough profit, then I don't wait for profit booking. So ultimately the thing is that system setups, strategies, CSF secondary. Ultimately you need to manage your risk as aggressive as possible. So in FNDO, like if I give you today's example, like आज मार्केट कैसा था कि पहले ओपन हुआ पॉजिटिव, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, उसके बाद से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, एट द एंड ऑफ द डे पूरा कोलैप्स कर गया. तो like you need to change your direction as fast as possible, and the thing is that you cannot stick to one point, like
If you are holding a good number of lots, then obviously you cannot afford to wait for whole day unless your a big number or a big percentage comes for profit or loss. Because in F&O trading, price do fluctuate. So mostly what I do, I enter with positional signal. I follow daily chart clearly, or I go extremely smaller time frame, like 1 minute time frame. So it depends on the day. Sometimes days are very much non-directional. Sometimes it is directional. So it depends on the day. It depends on the time, on the particular market condition. तो कुछ एकदम फिक्स नहीं रहता है, बट आई ट्राई टू एंटर विथ positional view के if it is going for a good movement, then I will hold. If I see after moving a little market direction change हो रहा है, तो I will exit. I want to wait for the stop loss. तो रिस्क को एग्रेसिवली मैनेज करना है, लॉस नहीं करना है सिंपली, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, दैट्स गुड. राइट, ऑसम ऑसम सर। आज की आपके मैंने ट्वीट देखा था जिसमें कि अराउंड 1 लाख का आपका आज का प्रॉफिट आई थिंक था। सो आई वुड लव टू नो मोर अबाउट इट, थोड़ा सा और स्ट्रेटजीज पे मैं दविंदर सर से, सागर सर से बात करता हूँ, एंड देन आई कम टू नो एंड आई वुड लव टू गेट टू नो कि आज की आपके एग्जैक्टली क्या मे बी ट्रेड से, इफ यू कैन शेयर विद अस, एंड कि वो आपने कैसे डिटरमिन किए। ओके, सो दविंदर सर, नेक्स्ट आपका, आई नो आपका एक स्पेशल डिस्कवरी सिस्टम है, एंड थोड़ा सा अगर उसमें स्नीक पीक मिले, ऑफ कोर्स नेक्स्ट सितंबर 1 को हम लोग उस पे और डिटेल में उसको देख के समझ के कोशिश करेंगे। आई एम नॉट इवन श्योर कि वो कितना पॉडकास्ट पे समझ में अभी आ पाएगा, बट स्टिल इफ यू कैन गिव अस अ स्नीक पीक इनटू इट। Yeah, sure, Vishu. So, yeah, so discovery is based on like two things. First is the trend. तो trend के लिए like I have few like trend following practices which I plotted on Nifty. So it's kind of an automated system which so, uh, like the तो जो length of trend है it depends on the actual money is दविंदर सर, present. आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक करिए, मे बी नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है। Yeah, actually was in transit, so maybe that could be the या reason. नाउ इट्स क्लियर सर। Acha. So yeah, so what I was saying is like discovery is basically I mean it consists of two parts. तो उसका जो पहला पार्ट है इट्स बेसिकली अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम. तो जो ट्रेंड जनरेट होता है लाइक यू नो जनरली इट कैप्चर्स यू नो क्लोज टू like 400 to sometime like 2000 point also move on a nifty. So on an average like it has capability to capture 400 to 700 points each trade, and on the loss side like it generally exit the trade probably in a 150 to 200 points range. So that is the trend following part. Second part is the strength of that trend. तो जो strength of trend identify करना है, so it's based on the real money which is which is traded by the people in the future and option segment. So I track few data points, and like I have kind of AI based system which identify like you know how particularly these type of so it basically identify the fractal कि जो आज का मेरा data है like in the past how many times the same data was present and what was the outcome of that. So based on these two like I try to trade. Right, right. Awesome, Yeah. awesome. Okay. Next, Davinder sir, I will come back to you once again to know more Sure, about sure. your recent trades on it. Yeah. Sagar sir, maybe if you can get a sneak peek of your strategy. I know you are a hardcore option scalper, but how do you determine your trades? I'm audible first. Let me know. Actually, मैं थोड़ा सा कहीं रुका हुआ हूँ तो properly Yes, चीज़ें yes, नहीं yes. बता पा अगर You voice are audible. clear. Yeah, okay. So basically, I'm doing option scalping bank nifty के अंदर में. So my time frame will be a smaller like 3 minutes or 2 minutes. I'm checking. So I have a multiple screens. So what I'm doing is I'm checking
pure bank nifty and nifty charts, also checking the all heavy mates जो heavy met stocks होते हैं like Reliance, HDFC Twins, ICIC बैंक निफ्टी के उधर और निफ्टी के दोनों साइड पे दिख रहा होता हूँ। एंड साथ में आई एम ऑल्सो चेकिंग द वॉल्यूम, सो मैं वॉल्यूम को 50K के ऊपर अगर वॉल्यूम मेरे को दिखता है कंसिस्टेंटली 2-3 टाइम्स, देन आई एम श्योर कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। आई एम चेकिंग RSI ऑल्सो दैट टाइम, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे RSI देखना इज लाइक कि अगर वो फ्लैट हो गया 70-80 पे, तो इट विल लाइक टाइम पास फॉर कपल ऑफ मिनट्स। तो एज अ स्कैल्पर आपको बहुत फास्ट मूव चाहिए, राइट? सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू एंट्री। अगर मैंने आज मॉर्निंग में भी एक ट्वीट किया था दैट टाइम कि मेरे को लग रहा है कि कूल ऑफ आ सकता है मार्केट में, एंड देन कूल ऑफ आया। उसके बाद आई ट्रेड ऑन अ पुट एंड आई गेन अराउंड 100 पॉइंट्स इन अ 17 सेकेंड। सो वो उसके बेस पे था, लाइक विक्स इज गोइंग पंपिंग अप एंड डाउन वहाँ से सडनली गिर रहा था, एंड बैंक निफ्टी इज लाइक स्ट्रेंथ बहुत खो रहा था, वॉल्यूम के साथ में गिर रहा था, एंड द सपोर्ट इज लाइक 17,680 समथिंग, अराउंड 80-90 के आसपास में, एंड 39,680 के आसपास में बैंक निफ्टी का वहाँ पे सपोर्ट था। तो जब ये ब्रेक हुआ तो आई एम श्योर कि हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है जो आप ट्रेड ले सकते हो। तो आई टुक अ ट्रेड एंड आई मेक गुड मनी उसमें। एंड इस तरीके का मेरा सेटअप है, लाइक तो आई एम चेकिंग द ऑल चार्ट डेटा, एंड पूरा अगर मैं देखूँ इंडाइसिस देखने के बाद मैं ग्लोबल मार्केट्स पूरे देख रहा होता हूँ, सारे हैवी वेट्स देख रहा होता हूँ उस टाइम पे, तो मेरे को एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ अगर विक्स भी मेरे को साथ दे रहा है, तो अगर विक्स पंप हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर विक्स के साथ में बैंक निफ्टी भी पंप हो रहा है या निफ्टी भी पंप हो रहा है, तो इट्स अ फेक मूव, तो वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो आई डोंट एंटर तब। I'm just waiting for the right opportunity and then I will enter. So that's my strategy. Nothing राइट, else. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। तो Yeah, आपके भी ट्रेड्स पे, रीसेंट ट्रेड्स पे मैं आऊंगा सागर से। sure. ओके। इन द मीनवाइल, जिन लोगों ने हम लोगों को रिसेंटली ज्वाइन किया है, व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज अ स्नीक पीक इनटू द ट्रिंकर ट्रेड स्प्रिंट दैट इज हैपनिंग नेक्स्ट वीक। Trinker's Trade Sprint क्या है? It's kind of a webinar, a workshop around futures and options, where you will get to see experts trade live and they'll share their strategies. So you'll have at the same time a panel of 8 experts. 6 of them are here tonight with us on this panel. And वो लोग अपनी screen share करके live trading 1st of September को करेंगे. It will be a Zoom call. You can attend it from your home and actually see it very easily. थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव भी रखेंगे, जैसे हम लोगों को जनरली पॉडकास्ट में इंटरेक्टिव होता है। देयर विल बी अ चैट ऑप्शन, आई विल बी मॉडरेटिंग, एंड जितने क्वेश्चन हो सकेंगे आई विल ट्राई टू टेक देम अप। द बेनिफिट ऑफ दिस इज जनरली ये वर्कशॉप मतलब स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक 2000 5000 एनीवेयर जाती हैं। दिस यू गेट फॉर 999, वो भी अर्ली बर्ड्स। अभी वी हैव जस्ट thought and announced it, so this you get for 499 right now. Please do go ahead, register for it. The tweet is pinned on this page and also on our Trinkerr profile. It will mean a lot for us to see your support, and of course, you'll get to learn a lot. And you can think of it, मतलब एक pizza कम खा लेना, I guess, and it will be recovered. Uh, so please do help us and support us. Do register for the link. It's pinned on the space. Right. So moving on. अच्छा, by the way, I started with what we are doing today is it's a sneak peek into that. वहाँ पे live trading होगी, live strategy share करके execute करके देखेंगे। आज हम थोड़ा थोड़ा इन strategies को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, and at the same time पास्ट ट्रेड्स की थोड़ी बातें कर रहे हैं कि इस समय रिसेंट में हमारे एक्सपर्ट्स ने इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए कौन से ट्रेड्स लिए थे। So that's about it. Also for those of you who may be thinking कि FNO बहुत complicated है, कैसे समझ में आएगा, क्या होगा? If you're in the market, if you're trying to learn about the market, even if you don't understand a lot on that day, थोड़ा बहुत तो कुछ जो भी पल्ले पड़ेगा आप नोट्स बना लेना, कुछ कर लेना, बट डू लिसन टू इट सो दैट अभी नहीं तो जब भी समझ में आएगा तब कैसा होगा, यू विल गेट अ स्नीक पीक इनटू द फ्यूचर। So I would strongly recommend, please do go through this workshop. Right. So moving on, Harsh Dixit sir, are you there with us? Yeah, I'm there. I'm there. Yeah. Okay, awesome, awesome. So sir, थोड़ा बहुत आपकी strategy के बारे में क्या हम लोग जान सकते हैं? What do you do in futures and options, and how do you exactly play out the game? So basically, I'm an option buyer, and I trade mostly Nifty, sometimes in Bank Nifty, and of course in stocks also I do trade. And I trade based on price action. The ongoing first I
analyze the ongoing trend, and then I try to take advantage of the price action breakouts. I'm a breakout trader because I'm a buyer. I would rather likely to be little late in a trend, but when I get a trade, I want to make sure that yes, at least I get a good trend and the trade goes with the I go with the right direction rather than guessing that okay whether the market is going to reverse or I follow the trend. So I trade price action breakout basically price action charts, head and shoulders, uh, triangles, mostly consolidation breakouts because for options buying you need momentum and momentum comes only after a breakout and a breakout coming from a long consolidation. So I usually trade positional. I don't trade intraday. I trade positional mostly. I take a position and carry forward for 2 or 3 days max, not more than that. But most of the time my positions get squared off maybe in 2 days. Sometimes in one day if the option moves very fast. Intraday, I usually don't close. Sometimes, yes, I do intraday, but mostly I'm positional. And for positional, of course, there are overnight risk of gap up, gap down, and that's why I always trade in direction of trend when the trend is in force, and I try to trade the breakouts when breakouts on uptrend and breakdowns in downtrend. Uh, and I create the price action on both. First, the instrument, there should be price action breakout on the instrument, and there should be breakout on option charts also, without which I definitely difficult to get right because most of the time in option buying there is a premium decay. So I trade only breakouts when it's coming on both the price action on option charts and the instrument itself. राइट राइट ऑसम सो कूल आरुष सर भी अभी ज्वाइन हम लोगों को करने ही वाले थे बट आई थिंक उनका कुछ कनेक्शन इश्यूज हो रहे हैं सो ही विल जॉइन अस राइट बैक okay so in the meanwhile let's start talking about the recent trades that we have our experts have taken in the recent while joy sir आपका जानना चाहूंगा आई थिंक मैंने कल परसों में भी देखा था एक आपका 50,000 का था आज भी 1 लाख डे था सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली हाउ डिड दीज ट्रेड्स प्ले आउट आपने कौन से में भी अगर आप इनसाइट्स देते हो क्या आपने सेलेक्ट किया था क्या ट्रेंड देखा था किस में देखा था एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट Um, Actually, amount doesn't matter. Like आज सुबह I had positional holdings in ABFRL, Apollo Hospital, Canara Bank, Marico. तो कैनरा बैंक ने अच्छा काम किया तो हो गया ABFRL में भी अच्छा मूवमेंट दिया था तो ये तो ओपनिंग का था ये तो पोजिशनल मूवमेंट था हाफ तो ओपनिंग का ही था rest what I did it was first Manappuram ने अच्छा मूवमेंट दिया था Manappuram और उसके बाद हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज पे अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया था तो इट डिपेंड्स लाइक अभी अच्छा मूवमेंट मतलब क्या है मनप्पुरम का एंट्री था अराउंड 105 के करीब एग्जिट कर लिया अराउंड 107 पे कुछ 108 पे कुछ ऐसा कुछ तो ऐसा कोई इट इज नॉट अ बिग परसेंटेज इट डिपेंड्स ऑन द लॉट साइज लाइक इफ यू ट्रेड 5 lots you will make that much if you trade 1 lot you will make that much so it depends on the lot size and it depends on your conviction if you are having that conviction that yes your system whatever you are following that will give you profit maybe not in this particular trade maybe not in next 1 or 2 trade but ultimately in next 10-20 trades you will be in profit so you will never hesitate to take positions and like now currently I'm having 5 lots Tata Steel short I'm having 2 lots of MCX short I have Tata Power short 3 lots I have Laura's Lab 3 lots short
and another one I forgot. So total 15 lots is hot है अभी मार्केट का देखो SGX 100 पॉइंट्स का करीब आप है तो क्या होगा कल अगर लॉस होगा तो कोई बात नहीं आई डोंट केयर बिकॉज आई नो डे आफ्टर टुमारो और नेक्स्ट वीक इसे डबल आ जाएगा तो इट डजंट मैटर तो पहला ये बात है कि आपको क्या करना है ये आपको एकदम क्लियर होना है कि हमको ये करना है ठीक है तो normally what I do I take 4-5 lots when I take entry most of the time thereafter when it goes as per my direction then it's all good you are making profits so koi baat nahi but if it is not going as per my direction then I start cutting my positions so agar main galat hu to I will make half of my stop loss my loss will be half as per my calculation but if I am correct then I will take the full profit तो ये completely risk management position management डिपेंड्स ऑन द मार्केट कभी क्या हो रहा है कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है तो वैसे ही सबसे प्लस माइनस करना पड़ता है तो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है हम लोग मार्केट नॉन डायरेक्शनल बन जाएगा तो कंफ्यूज्ड पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है कभी कभी मार्केट अगर डायरेक्शनल है तो अच्छा मूवमेंट मिल जाता है तो लाइक जुलाई मंथ तो ऐसा कोई अच्छा मंथ नहीं था फॉर मी ऐसा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ था बट अगस्त इट वाज गुड तो मार्केट अच्छा होता है तो सब कुछ ठीक है अभी मार्केट अगर गिरना चालू हो जाएगा शायद एक दिन दो दिन प्रॉफिट होगा बट उसके बाद सेकेंडरी मूवमेंट एज यू नो कि सेकेंडरी मूवमेंट पे थोड़ा मैनिपुलेशन ज़्यादा आता है तो शायद मार्केट अगर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो जो भी सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो उतनी अच्छी तरह से फॉलो ना भी कर सकता है तो दैट वी नीड टू थिंक अबाउट लाइक व्हाट आई डू जब मार्केट नॉर्मल है when market is behaving normally when movements are coming very well that time I try to make as much as possible but when market is going in secondary direction when price is behaving not as per expectation that time I reduce my quantity I don't take my whole risk I reduce my risk I reduce my quantity and I don't care even if next 1 month market अच्छा नहीं जाता है तो don't worry just enjoy the game अगर अभी हम 5 लॉट्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो तभी 1 लॉट्स पे ट्रेड करेंगे तो ऐसे थोड़ा मैनेज करना पड़ता है खुद को पहचानना पड़ता है कि हमसे क्या होता है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए लागू होगा it may be different for others but for me this is the way how I make money and this is the way it works for me so I try to manage my risk as much as possible and I just go with the trend for example nifty का direction down है क्लियरली डाउन है कल अगर 100 पॉइंट्स आप भी खोलेगा तो निफ्टी नीचे ही जाने वाला है तो ओपनिंग इट डजंट मैटर ओपनिंग तो ऊपर नीचे होता ही जाएगा बट अल्टीमेटली माय व्यू इज दैट मार्केट को अभी नीचे जाना है मार्केट ये अगर 17500 के नीचे गया तो एकदम इसको और 200-300 पॉइंट तो आ ही जाएगा आराम से उसके बाद और भी 200-300 आ जाएगा तो डायरेक्शन के साथ जाना है अगर ऐसा भी हो सकता है कि कल सेकंड हाफ में शायद मुझे ऐसा भी कुछ दिखने को मिल गया कि नहीं अभी ऊपर जाएगा तो तब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो आई गो विद द डायरेक्शन आई गो विद द ट्रेंड कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हम शॉर्ट है ऊपर जा रहा है तो हम लॉन्ग है एज सिंपल एज दैट राइट ऑसम ऑसम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर जैसा कि जॉय सर ने बोला दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर जॉय सर एंड दिस इज हाउ ही एक्टिवली मैनेजेस हिज रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज देयर आर सो मेनी वेज टू मेक मनी इन द मार्केट एंड व्हेन वी आर न्यू आई थिंक एक प्लेथरा ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो एट सम पॉइंट मतलब यू नो देयर इज अ हेवी चांस कि आप गोल 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 घूमते रहते हो थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा वो so this is for those who are new. Please do check out Trinkerr Trade Sprint जो tweet pinned है. You get to see 8 final prepared strategies that do make money. So आपको थोड़ा बहुत maybe hopefully एक direction मिलेगा कि okay this is something that calls to me. And honestly I think जैसा कि जॉय सर ने बोला कि हर किसी का एक तरीका होता है which works for them and this is what is वो it's a match made in heavens.
So at least you'll get to know 8 different strategies. They can be scalping, जैसा कि आज सागर सर ने भी बोला, ट्रेंडोनॉमिक्स राज दीक्षित सर ने बोला कि वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं. So अलग जॉय सर का अलग अपना एक स्ट्रैटेजी है. तो you get to see many strategies. You'll get to see. Check them out. Live trading होगी, explanations भी होंगे, करके देखेंगे, काफी मजा आएगा. Please do check it out. The tweet is pinned on this page and on our, also on our profile. Right. So Arush sir is here with us now, sir. I would love to know what strategy do you use and कैसे आप करते हो futures and options में trade. Hi Vishu. Hi everybody. Connecting after a long time on Trinker's podcast. So feeling good. So coming back to the topic, how do I trade? So I'm a discretionary trader, and over a period of 7 years, I have tried different things. Whether it's about breakout trading or trading on basis of mean reversion, trading on basis of volumes, trading on basis of open interest data, and I try all sort of things. And then also working on basis of vanilla price action. So I do all of it, and depending on the stock momentum and how the technical picture looks, putting in the relevant thing and the strategy, I usually trade stocks. So I do option buying and option selling, both of it. And I'm good at picking directions, so I usually go with naked option buying or option selling. I don't deploy strategies most of the time. I do when there's no clear cut direction, like we saw in past in Russia Ukraine times, or when market was quite choppy and it didn't have any direction. At that time we can deploy strategies, or in cases where we expect explosive volatility explosion, or a very stagnant market or a very calm market. Then in that case a trend follower can't earn anything. So in that case also strategies work quite well. Otherwise in such a market, in market like today's market, or uh, the market which we have seen since 15,200. So I was very precise that we have made the bottom around 15,200. I had published many posts at that time on Twitter. So I was clear that we are in a bull market. We are going to see a bull market very soon, because prior to that, we were seeing good correction in the market from 18,500 to 15,200. So at that time, I was very clear that we are going to see upsurge, and even at this point, I see upsurge till 18,500 and 20,000 before this year ends, or probably we could touch that till Diwali also. So I'm playing directional bets right now. So I deploy strategies in futures, options. Uh, so that's how I play in segment called future and option. Right, right. Awesome, awesome, sir. So थोड़ा बहुत since we have just started discussing the recent trades भी, can you tell us maybe थोड़ा बहुत a sneak peek into इसको use करते हुए recently आपने कौन से trades लिए थे and what happened to them? So I was very bullish on Adani Group. So even on Twitter, even on Telegram, and everywhere, I had posted that we are going to see breakout in Adani Group stocks. And at 2200, I posted it on Twitter, and I myself deployed the strategy. So from there, I had been playing longs in Adani Enterprise, in long call option, in long futures, and I did scalping along the way, and as the trend went on, I keep booking the profit and re-entering when I saw the momentum. So I played that counter, and then today I played a lot of PSU counters, like PNB, CUB, etc. And prior to that, yesterday and day before yesterday, I had given long on RBL Bank. Yesterday we saw almost a 16% move in RBL Bank. Today we saw 7% move. So I had given long prior to that, and I had gone long prior to that. So that was one wonderful trade playing out. And
I played longs on Bajaj Finserv. So there are many counters. I usually look for momentum, and I like the financial space right now. राइट राइट ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। सागर सर, थोड़ा बहुत आपके कुछ आज के ट्रेड्स में भी थर्सडे एक्सपायरी, आई थिंक आपका काफी एक्साइटिंग डे होता है आपके लिए स्कैल्पिंग के लिए। Yeah, सो कैन I'm यू टेल audible. अस आज या कल में आपके कुछ रीसेंट ट्रेड्स के बारे में? या सो मैंने आज एक बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। मतलब मैंने कपल ऑफ ट्रेड्स लिए, बहुत सारे ट्रेड्स लिए वैसे तो, बट मोस्टली मैंने पुट साइड में ही ट्रेड लिया, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में एक ट्राई किया था 9:30 के बाद में। तो करीबन उसमें मेरे को मोमेंटम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे को लगा था कि मार्केट अप जाने वाला है। बैंक निफ्टी वहाँ पे सफ़र कर रहा था, जब मैंने आरएसआई दिखा कि ओवरबॉट है। अगर आप प्रॉपरली, अगर ट्वीट भी मैंने किया था उसमें कि मेरे को लग रहा है वो चीज़। उसके बाद मैंने इंडाइसिस और सारी चीज़ें देखी प्रॉपरली, तो मेरे को लगा कि हाँ एक शॉर्ट हो सकता है, मतलब कूल हो सकता है मार्केट में, क्योंकि आरएसआई बहुत ज़्यादा बॉट पे था। 70-75 चल रहा था उस टाइम पे, और बहुत टाइम तक फ्लैट रहा वहाँ पे, और मार्केट भी बहुत फ्लैट था उस टाइम पे। एंड सडन एक ड्रॉप आता है मार्केट के अंदर में, एंड विक्स इज पंपिंग अप। सो वहाँ से एक इंडिकेशन मिल गया था कि हाँ यहाँ से एक अगर सपोर्ट ब्रेक करता है विद वॉल्यूम, अगर निफ्टी में वॉल्यूम आ रहे हैं, तब बैंक निफ्टी भी ड्रैग हो सकता है। सो आई टुक अ पोजिशन 39,700 का पुट अराउंड। मेरे को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स थे। जस्ट अ सेक। सो या, सो 39,700 का मैंने करीबन लिया था। आई एम ऑडिबल ना? यस यस, यू आर ऑडिबल सर। 39,700 का मैंने पुट लिया था 4:31 पे, एंड 11:24 मिनट 29 सेकेंड पे, एंड 11:24 मिनट 46 सेकेंड पे आई एग्जिट अराउंड 5:30 पे। वो एक स्पाइक जो आई थी इन सेकेंड में, तो आई डिड ट्रेड ऑन दैट स्पाइक। 17 सेकेंड में आई गेन 100 पॉइंट्स। अदर उसमें विक्स अप था, आरएसआई ओवरबॉट जोन में था। 39,280 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, एंड 17,690 का एक सपोर्ट था निफ्टी का, वो हुआ। एंड आई बॉट ऑलवेज गो विद अ डीप आईटीएम, बिकॉज एज अ स्कैल्पर जब आप ओटीएम बाय कर रहे हो, तो स्कैल्पर के लिए अगर डीप आईटीएम जाते हो तो आपको जल्दी मूव मिलता है, मोमेंटम फास्ट होता है, तो यू कैन मेक गुड मनी है। इफ़ यू प्रिडिक्ट ओनली 3 or 4 मिनट्स, तो इट्स गुड एज अ बायर। अगर आप एक्सपायरी पे काम कर रहे हो, कि प्रीमियम श्रिंक होना, एंड फिर राइटर्स आपके साथ में कर सकते हैं। वहाँ पे पोर्ट राइटिंग्स भी बहुत ज़्यादा चल रही थी कुछ स्ट्राइक प्राइस में, बट आई टुक अ ट्रेड विथ गुड क्वांटिटीज, और लकीली आई मेड मनी 17 सेकेंड में। आई डोंट एक्सपेक्ट कि 17 सेकेंड में इतना हो जाएगा। मूव आया, आई ट्रेल इट एंड आई स्क्वायर ऑफ। सो और उसका 560 का हाई था, और आई एग्जिट अराउंड 5:30 इन अ सैक। तो वो एक ट्रेड था। उसके बाद में करीबन 400 का मैंने एक पुट लिया था, 126 रुपये के आसपास में, के आसपास का। तो वहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो 90 रुपीज़ के आसपास में मैंने बाय किया था, 39,300 का पुट। एंड वो 1 मिनट के अंदर वहाँ पे भी एक स्पाइक आई थी, बिकॉज ये जो डाउनफॉल आया था मार्केट के अंदर में उसके बाद में, बिकॉज ऑफ द डाउ एंड अदर थिंग्स। उसके बाद वहाँ से एक रिवर्सल ट्रेंड दिखा मेरे को। वहाँ पे सुपर ट्रेंड पे एक रिवर्सल दिख रहा था, तो वहाँ पे जब उसने टच किया सुपर ट्रेंड को, तो आई कम्प्लीटली सॉ कि हाँ यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है, तो आई बॉट इट। एंड वो विद इन अ मिनट के अंदर में डबल हो गया। आफ्टर दैट एक ट्रेड और लिया था करीबन 2:50 के आसपास में, जो 126 रुपीज़ पे मेरे को मिल रहा था, 39,400 का पी। एंड वो 300 हो गया विथ इन 255 पे, 300 समथिंग चले गया था। तो दिस आर द ट्रेड बिकॉज ऑफ द सुपर ट्रेंड, एंड वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा था। अब डेटा बियरिश होते जा रहा था। बाद में मॉर्निंग में डेटा इज सुपर बुलिश, उसके बाद रिजेक्शन आने लगा, उसके बाद डेटा के अंदर में चेंजेस होने लगे, वो एडजस्टमेंट होने लगे, वो चीज़ क्लियरली दिख रही थी। एंड विक्स को मैं क्लियरली ट्रैक करता हूँ। अगर विक्स एक प्रॉपरली, अगर मैं बात करूँ, अगर आप विक्स को भी ट्रैक करो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी एज अ स्कैल्पो, कि वो माइक्रो मिनट्स में क्या कर रहा है, उस मिनट्स के अंदर में कितना पंप हो रहा है। अगर विक्स पंप ही नहीं हो रहा है, या वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहा, तो यू कांट मेक मनी एज अ स्कैल्पर।
वो क्योंकि फेक मूव देगा आपको, या तो आपको 4-5 रुपए का प्रीमियम मिलेगा बट उसके बाद सडनली ड्रॉप आ जाएगा प्रीमियम के अंदर 20-25 रुपए के लिए, तो आप लॉस कर सकते हो वहाँ पे। तो आपको प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डेटा, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद देन यू कैन मेक गुड मनी। तो आज का ट्रेड डे ऑल ग्रीन गुड, बहुत अच्छी एक्सपायरी थी मेरे लिए। आई डोंट नो अबाउट लोअर कैसा रहा, बट वॉलेटिलिटी बहुत थी, बट या आई मेक गुड मनी। राइट राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आई लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थर्सडे, उसमें क्या आपके ट्रेड्स होंगे। लेट्स सी। मेरा इसमें सबसे बड़ा मेरा डाउट है कि 17 सेकंड में आपने उसको स्क्वायर ऑफ किया कैसे। मेरे को 17 सेकंड यही सोचने में लग जाते हैं कि हुआ क्या है मेरे ट्रेड में। एक्चुअली आई डिड ऑल ट्रेड बाय मैनुअली, तो वो स्क्रीन पे रहता ही है। तो मैं देख रहा था और मेरे को खुद को नहीं पता था विष्णु कि यार ये इतनी जल्दी पंप हो जाएगी, ठीक है। आई एम जस्ट चेकिंग, मैं ट्रेलिंग के लिए जा ही रहा था, मैं ऑर्डर सेट कर ही रहा था ट्रेल के लिए, और आई सॉ पीएनएल एक स्क्रीन पे कि भाई इतना पीएनएल दिख रहा है, तो आई कंप्लीटली मार्केट टू मार्केट एग्जिट, एंड उसी में वो 30 पॉइंट्स का गैप मेरे को मिल गया। अगर मैं वो लिमिट ऑर्डर सेट करता है या उसमें जाता तो मैं लॉस कर देता, या तो वो क्योंकि वो जब 1 मिनट की जो कैंडल थी वो क्लोज हुई 400 से, आई गेस 390 से वो 560 गई थी वो कैंडल इन अ मिनट, तो उसी के अंदर मैं 560 मारने का क्लोज करी थी 490 के आसपास में, तो आई मिस द 60 पॉइंट अगर मैं क्लोजिंग का वेट करता। और माइट भी पॉसिबल कि एकदम सडन ड्रॉप आ जाए, तो वही 560 की प्रीमियम 126 हो गई थी बाद में इन अ आवर। सो ये ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ओके, सो हर्ष दीक्षित सर, आपसे भी जानना चाहूंगा समथिंग सम इनसाइट्स इनटू योर रीसेंट ट्रेड्स आपने जो लिए थे। थोड़ा सा आपने ऑलरेडी टच अपॉन किया, बट थोड़ा सा और अगर हम लोगों को डीपर इनसाइट्स मिले कि एग्जैक्टली क्या आपने देखा उन ट्रेंड्स में और कैसे उनको ट्रेड किया। सर यू आर ऑन म्यूट, हर्ष हर्ष सर। Hello, yeah. Can you hear me now? ये Yeah. So for me, fortunately, July and August both months were good. Uh, because trending move था, Nifty में भी था, and obviously we got a lot of couple of moves in stocks, ranging from SPI, a lot of auto stocks, Maruti, and Tata Motors, and a couple of stocks, Bail, Sale. So I usually do trend trading, breakout trading. रिसेंटली एक्चुअली मैं जस्ट अभी 2 दिन से ही एक्टिव हूँ। बीच में मैं छुट्टी पे था बिकॉज ऑफ माय पर्सनल कमिटमेंट, तो इतना ट्रेड हुआ नहीं है। कल एक ट्रेड लिया था मैंने निफ्टी पे, ब्रेकआउट ट्रेड लिया था, और ऑब्वियसली आज उसमें मैंने नेट नेट ऑलमोस्ट माइनर प्रॉफिट में एग्जिट किया। कॉल लिया था मैंने 17,800 का 1 सितंबर का, और अराउंड 85 एंट्री किया था मैंने, और अराउंड 100 को मेरा वो एसएल ट्रेडिंग एसएल ट्रिगर हो गया। ऊपर में अराउंड वो 120 या 25 कुछ गया था, बट ऑब्वियसली आई आई ट्रेल एसएल फर्स्ट। जब इनिशियल एंट्री में लेता हूँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग ब्रेकआउट एंड रन अप, बट इनिशियल जब एंट्री लेता हूँ मैं थोड़ा वाइड एसएल रखता हूँ, एंड व्हेन इट गोज वेरी वाइड, आई मीन अगर ऑप्शन more than 50-70% मूव होता है, देन आई गो विद अ टाइट स्टॉप लॉस। तो इतना मूव हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस बहुत टाइट नहीं रखा था, वाइड रखा था। दैट्स ओके। So my trade was long in Nifty calls, and net about मैंने वो अराउंड माइनर प्रॉफिट में ही आज क्लोज किया। another trade was SBI. I closed with good profit, but I mean obviously इतना अच्छा move नहीं मिला because market fell down. Tomorrow I'm looking to add SBI again in calls. If we get a good breakout about 523, then I will add calls. Recently अभी market एक ट्रेंड के बाद थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, तो अभी बहुत ट्रेड्स मिलने रिसेंट मूव में, अभी रिसेंट वीक में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। एक कंसोलिडेशन होने के बाद अगर कुछ ट्रेड मिलते हैं, आई विल ऑब्वियसली कीप वाचिंग फॉर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड रादर देन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में अभी
वापस एक बड़ा वाला ट्रेंडिंग मूव आते हुए तो नहीं दिख रहा. अपसाइड दिख रहा है कंटिन्यू होते हुए. वी हैव बीन बुलिश फ्रॉम 15,200 और आई मीन फॉर्चुनेटली आई कुड पिक द बॉटम. और लास्ट ईयर भी इट वाज अ वॉलेटाइल, आई मीन पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय हेल्प ऑफ इलियट वेव्स वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो रेंजेस थे, we traded very good on both upside and downside in the volatile market of last year. So अभी देखते हैं, I am expecting a trending bull market going ahead. But in very recent time निफ्टी में थोड़ा ट्रेड मिलना डिफिकल्ट रहेगा. स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेड में लेना पसंद करूंगा. Right. Awesome. I really look forward to your trades on the coming week, coming expiry, which would be 1st of September. Right. So this was it. थोड़ा सा sneak peek था. दविंदर सर और ब्रेकआउट चार्ट सर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कनेक्शन इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिस वजह से कि हम लोगों को स्ट्रैटेजी तो जानने को मिली, बट आई गेस उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हम लोगों को 1st of September को ही देखने मिलेगा. एंड सेम थिंग विद ब्रेकआउट चार्ट सर. So once again, for those who did not know what was happening in this space, 1st of September को Trinkerr trade sprint हो रहा है, which is going to be kind of a live webinar कह लीजिए या workshop कह लीजिए. And उसमें हमारे 8 experts, जिसमें से कि 4 अभी पैनल पर भी हैं, they are gonna share their strategies live, and they are also gonna take ट्रेड. जो भी वो बेसिकली उस दिन उनको जब भी कोई ट्रेड सेटअप होगा, अगर दिखाई दिया, उनकी जो स्ट्रेटजी बताई वो जैसे ही अगर उनको दिखाई देगी तो वो उसको लेंगे. सो ऑल ऑफ दिस यू विल गेट टू सी. देयर विल बी अ जूम कॉल. मैं ही अगेन मॉडरेटर रहूंगा उस दिन भी, एंड हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे. अगर कोई बीच में लेट्स से कुछ ट्रेड सेटअप मिला, उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, तो वी विल शेयर इमीडिएटली. इन द मीनवाइल बातें करते रहेंगे. थोड़े बहुत जो आपके क्वेश्चंस होंगे, वील ट्राई टू कीप आंसरिंग में, वील ट्राई टू कीप इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल. There will be limited seats, just 250 seats are there. Early bird discount bhi hai. The tweet is pinned on this space on the top. Please do check it out. It's right now early bird discount ke saath it's just $500, which is almost nothing. I mean, market में जितने बड़े बड़े amounts में हम लोग deal करते हैं, $500 is nothing to actually interact with our experts and uh, get to see their strategies, get to see them trade live. Even if you are new, just it's a chance to see ki when you're at the top of your game, how do you play with your capital and how do you make money, how do strategies play out in real life action. So I all I would say is, if you like our podcast, I'm sure you're gonna love our Zoom call. Do check it out. If you like it, please do invest a small amount of $500 in this workshop, and I hope to see everyone there. And thank you so much for your time tonight as well. I hope to see you on 1st of September. Please do register for it. And finally, thank you so much, Joy sir, Arrush sir, Sagar sir, Harsh Dixit sir, and the rest of the panelists who are unfortunately are facing some technical issues, so cannot be here. One, for this podcast tonight, and second, and above everything, for the live trading session which is going to happen next week. This is gonna be amazing. Thank you so much, everybody, for your time. That's it. So, bye bye. Have a profitable days ahead and a really good night. Bye bye.